Students, in this video we will discuss the topic problems of concurrency control. Now, concurrency control is the process of managing simultaneous execution of transactions in a multi-processing database system without having them interfere with one another. मीन्स एक मल्टी प्रोसेसिंग डेटाबेस सिस्टम में जब साइमल्टेनियसली बहुत सारी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करती हैं तो उनके एग्जीक्यूशन को मैनेज करने के प्रोसेस को हम कहते हैं कंकरेंसी कंट्रोल. दिस प्रॉपर्टी ऑफ DBMS अलाउज मेनी ट्रांजैक्शंस टू एक्सेस द सेम डेटाबेस एट द सेम टाइम without interfering with one another. Now, the primary goal of concurrency is to ensure the atomicity of the execution of transaction in a multi-user database environment. Now, as we have already discussed, atomicity property of a transaction means either all the operations of a transaction are complete or the transaction is aborted. So now problems of concurrency control. Now when concurrent transactions are executed in an uncontrolled manner, several problems can occur. The three main problems are lost update problem, dirty read problem and unrepeatable read problem. So lost update. Now a lost update problem occurs when two transactions that access the same database items have their operations in a way that makes the value of some database item incorrect. Or in other words, we can say if transaction T1 and T2 both read a record and then update it, the effect of first update will be overwritten by the second update. मीन्स सपोज दो ट्रांजेक्शन्स T1 एंड T2 कोई सेम डेटा आइटम को रीड कर रहे हैं और उसको अपडेट कर रहे हैं, तो इफेक्ट ऑफ फर्स्ट अपडेट अगर ओवर रिटर्न हो जाए सेकेंड अपडेट से तो उसे हम कहते हैं लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम. नाउ you can see this example. There are two transactions in this schedule, T1 and T2. Some operations are performed on this. Now let us discuss this example. Suppose that the initial value of account A and B are $2,000 and $1,500 respectively. Then after the serial execution of T1 and T2, the value of account A should be $1,938 and the account B should be $1,600. Now suppose that the operations of T1 and T2 are interleaved. As you can see in the example, the operations are interleaved in such a way that T2 reads the value of account A before T1 updates its value in the database. Suppose T2 अगर रीड कर ले अकाउंट ए की वैल्यू बिफोर T1 ने उसे अपडेट किया है डेटाबेस में, उससे पहले T2 उसे रीड कर ले. नाउ when T2 updates the value of account A in the database, the value of account A updated by transaction T1 is overwritten and hence is lost. तो इसका मतलब T1 ने अपडेट करे डेटाबेस में, उससे पहले T2 ने वैल्यू को अपडेट कर दिया डेटाबेस में, तो फर्स्ट अपडेट की जो वैल्यू है दैट इज ओवररिटन एंड हेंस इज लॉस्ट. दिस इज नोन एज लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम. Second is dirty read. Now, a dirty read problem occurs when one transaction updates a data item and then the transaction fails for some reason. The updated database item is accessed by another transaction before it is changed back to the original value. Dirty read problem कब आती है? Suppose कोई transaction update करती है database item, किसी डेटाबेस आइटम को डेटाबेस में अपडेट किया किसी ट्रांजैक्शन ने और किसी रीज़न की वजह से वो ट्रांजैक्शन अबॉर्ट हो गई.
बट जो अपडेट था वो तो रिकॉर्ड हो चुका है डेटाबेस के अंदर, एंड दैट अपडेटेड डेटाबेस इज रेड बाय सम अदर ट्रांजेक्शन. इसका मतलब दूसरी ट्रांजेक्शन ने एक डर्टी डेटा को रीड कर लिया है. दिस इज नोन एज डर्टी रीड प्रॉब्लम. In other words, suppose if a transaction T1 updates a record which is read by the transaction T2, then T1 aborts and T2 now has the value which never formed part of a stable database. We have used the same example for this problem also. Now assume that T1 fails after debiting $100 from account A, but before crediting this amount to account B, this will leave the database in an inconsistent state, and the value of A is now $1,900, which must be changed back to its original, that is $2,000, because transaction T1 has failed. So it should it should come back to its original value, but the new value updated is $1,900. However, before the transaction T1 is rolled back, let another transaction T2 read the incorrect value of A. Now transaction T2 will read an incorrect value, that is $1,900. So this incorrect value of account A that is read by transaction T2 is called dirty data, and the problem is called dirty read problem. Third problem is unrepeatable read. Now the third problem occurs when a transaction tries to read the value of the data item twice, and another transaction updates the same data item in between the two read operations of the first transaction. As a result, the first transaction reads varied values of same data item during its execution. Means, suppose transaction T1 ने किसी डेटा आइटम X को 2 बार कॉन्सिक्यूटिवली रीड किया, और उस कॉन्सिक्यूटिव रीड्स के बीच में ट्रांजैक्शन T2 ने वैल्यू ऑफ X को अपडेट कर दिया. तो दैट मीन्स सेम ट्रांजैक्शन ने डेटा आइटम को कॉन्सिक्यूटिवली रीड किया बट डिफरेंट वैल्यूज को रीड किया. दिस इज नोन एज अनरिपीटेबल रीड. यू कैन सी दिस एग्जाम्पल. ट्रांजैक्शन T3 ने रीड किया A को, और उसके बाद ट्रांजैक्शन T4 ने उसको वैल्यू को अपडेट कर दिया, और ट्रांजैक्शन T3 ने उसी टाइम पे फिर से कॉन्जिक्यूटिवली फिर से रीड किया A को. अब इन दोनों रीड्स के बीच में T4 ने वैल्यू को अपडेट कर दिया A की. तो दैट मीन्स दिस इज अनरिपीटेबल रीड. 2 कॉन्जिक्यूटिव रीड्स के बीच में किसी और ट्रांजेक्शन ने वैल्यू को अपडेट कर दिया. Now consider a transaction T3 that reads the value of account A. At this point, let another transaction T4 update the value of account A. Now if T3 again tries to read the value of account A, it will get a different value. As a result, the transaction T3 receives different values of 2 reads of account A. This interleaved schedule of transaction T3 and T4 that leads to the problem of unrepeatable read. So these were the 3 problems of concurrency control. Thank you.